वेलकम टू एजीपीजी स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल 5 एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट सेकेंड माइक्रोस्कोप पार्ट प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। एक जो माइक्रोस्कोप होता है, एक जो हाई पावर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें हाई लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन रहते हैं in comparison to low power microscope. It is used to view smaller specimens and which cannot be seen at lower levels of magnification. Structural components. First, head body houses the optical parts in the upper part of the microscope. Second point is base of the microscope supports the microscope and houses the illuminator. Third is arm connects to the base and support the microscope head. It is also used to carry the microscope. Optical components. There are two optical systems in compound microscope. Two optical components रहते हैं. First is eye lens, eyepiece lenses. Second is objective lenses. Eyepiece lenses or ocular is what you look through at the top of the microscope. Typically, standard eyepieces have a magnifying power of 10x. 10x magnifying power रहती है इसकी. And optional eyepieces of varying powers are available typically from 5x to 30x. आई पीस जो आई पीस ट्यूब जो होती है वो आई पीस को होल्ड करती है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस के अबव होता है, ऊपर. माइक्रोस्कोप डजंट नीड अ अडाप्टर. Objective lenses are lenses on the microscope. They range from 4x to 100x and typically include 3, 4, or 5 on lenses on most microscope. Coarse and fine focus knobs are used to focus the microscope. Coaxial focus knobs are more convenient since the viewer doesn't have to group for a different knob. Stage is where the specimen to be viewed is placed. Clips are used when there is no mechanical stage. Aperture is the aperture is the hole in the stage through which the base light reaches the stage. Condenser is used to collect and focus the light from the illuminator onto the specimen. It is located above the condenser and below the stage. Most high quality microscopes include on app condenser, which an iris diaphragm. Condenser focus knob moves the condenser up or down to control the lightning focus on the specimen. और जो मोस्ट हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें ऐप कंडेंसर होता है विद एन आइरिस डायफ्राम. और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो एक कंडेंसर होता है, जो जो कि जो लाइट होती है उसको डायरेक्ट विजिबल कराता है फ्रॉम द बेस टू द स्पेसिमेन. दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. Experiment 3. Methods of sterilization. Sterilization, it is defined as a process where all the living microorganisms including bacteria spores are killed. तो जो भी living microorganisms और जो भी बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं उनको किल करते हैं. Physical methods of sterilization. First, sunlight. The microbial activity of sunlight is mainly due to the presence of ultraviolet rays in it. Sunlight is not sporicidal. It does not sterilize, uh, tending to kill spores, so it doesn't sterilize. Second point is heat. Heat is considered to be most reliable method of sterilization of articles that can withstand heat. Third point, red heat. Articles such as bacteriological loops, straight wires, tips of forceps, and searing spatulas are sterilized by holding them in Bunsen flame till they become red hot. Flaming. This is the method of passing the article over Bunsen flame but not heating it to redness. तो ये एक ऐसा मैटर होता है जिसमें कि जो आर्टिकल होता है उसको बंसन फ्लेम के ऊपर पास कराते हैं बट नॉट हीटिंग इट टू रेडनेस.
जैसे क्रैकिंग ऑफ द ग्लास वेयर में अकर। ठीक है, अगर ज़्यादा इसको हम हीट कर देंगे तो क्रैकिंग हो सकती है। हॉट एयर ओवन, दिस मेथड was introduced by Louis Pasteur. Article to be sliced are exposed to high temperature 160 degrees centigrade during of 1 hours in electrically heated oven. Articles sterilized. Metallic instruments, glassware, swabs, oil, grease, petroleum, jelly and some pharmaceutical products के आर्टिकल्स स्टरलाइज होते हैं. And autoclave. In an autoclave, the water is boiled in a closed chamber. As the pressure rises, the boiling point of the water also raises. At pressure 150 IBS inside autoclave, the temperature is said to be 121 degree centigrade. Filtration. Filtration doesn't kill microbes, it separates them out. Membrane filters with its pore size between 0.2 to 0.45 are commonly used to remove particles from solution that can't be removed particles from solution that cannot be autoclaved. Filtration is added by using either positive or negative pressure. Using vacuum pumps, the older filters made by earthenware are called depth filters. प्रोसेस होती है जिसमें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं वाटर एंड सॉइल से टू प्रिवेंट कंटामिनेशन. एंड फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस होती है that uses a porous material to separate substances on their size. जिसमें कि the material is called a filter medium and the fluid passes through is called the filtrate. Experiment 4. Nutrient agar media and their preparation. Nutrient agar composition, preparation and uses. Nutrient agar is a general purpose nutrient medium and इसका यूज होता है for cultivation of microbes supporting growth of wide range of non-facetious organisms. Non-fat non-facetious means uh, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं that can grow without a special condition or substances and and are able to replicate quickly. इनको ग्रो करने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन और सब्सटेंस की नीड नहीं होती है. They can grow in uncontrolled environment and synthesize their own organic molecules. Composition of nutrient agar. First 0.5% peptone. Second ये एक enzymatic disease of animal protein होता है and 0.3% beef extract, yeast extract. थर्ड ये एक वाटर soluble substance होता है जो कि ग्रोथ को हेल्प जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ में हेल्प करता है सच एज विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स 1.5% अगर और एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है इसमें 0.5% NaCl होता है. न्यूट्रिएंट एगर में जो सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस होता है जो कि एक उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है. दिस लाइक एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंस होता है उसी के सिमिलर होता है ये. एंड लास्ट इज डिस्टिल्ड वाटर. Agar. Here are 6 points to prepare of nutrient agar. First is suspend 28 gram of nutrient agar powder in 1 liter of distilled water. Heat this mixture while stirring to fully dissolve all components. Means properly जब dissolve हो जाए मीन्स प्रॉपरली ऑल कंपोनेंट्स डिसॉल्व हो जाए तब तक इसको हीट करना है. थर्ड ऑटोक्लेव द डिसॉल्व मिक्सचर एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के लिए इसको जो डिसॉल्व मिक्सचर है उसको 121 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव करना है. फोर्थ वंस द न्यूट्रिएंट एगर हैज बीन ऑटोक्लेव्ड अलाउ इट टू कूल बट नॉट सॉलिडिफाई. कूल होने देना है लेकिन सॉलिडिफाई नहीं होने देना है मीन्स सॉलिड फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं होने देना है. Fifth point is pour nutrient agar into each plate. Each plate में इसको डालना है and leave plates on the straight surface until the agar has solidified. और उस प्लेट को तब तक ऐसे छोड़ देना जब तक कि
एगर है वो सॉलिडिफाइड नहीं हो जाता है। फिजिक्स लास्ट स्टेप है, रिप्लेस द लिड ऑफ ईच पेट्री डिश and store the plates in a refrigerator. Uses and last is uses of nutrient agar. First, it is frequently used for isolation or purification of culture. इसका हम लोग frequently यूज कर सकते हैं isolation और purification of culture. Second is it can also be used as means for producing the bacterial laws needed for antibiotic sensitivity test. Gram of agar plates which we use to grow बैक्टीरिया का यूज होता है। ये बैक्टीरिया को कल्चर करने में यूज होता है। साइंटिस्ट यूज एगर टू क्रिएट अ सॉलिड ग्रोइंग एरिया mixed with nutrients for bacteria they want to culture and identify. Experiment 5, enumeration of microbial population in soil. Enumeration means the process of determining the number of microorganisms in a sample. Microorganisms lives in thin films of water that surround soil particles. और ये जो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इंक्लूड करते हैं माइक्रोफ्लोरा, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसिट्स एंड माइक्रोफ्लोरा is protozoa and nematodes. Bacteria are small about 1 to 10 micron and occur in three general shape sorts: bacillus, sphericals, and coccus and spirilla. These are the diagrams of these shapes of bacteria. Agar plate method for microbial count. In this method, soil is dispersed in the agar medium so that individual microbial cells is exposed. कॉलोनीज को काउंट करने के लिए हम एगर प्लेट का यूज करते हैं। एगर प्लेट मेथड फॉर माइक्रोबियल काउंट। एगर प्लेट इस मेथड में जो एगर जो मीडियम होता है उसमें हम सॉइल को डिस्पर्स कर सकते हैं जिससे कि जो इंडिविजुअल्स माइक्रोबियल सेल्स हैं उनके जो कुछ फ्रेगमेंट्स हैं उनको माइक्रोस्कोपिक कॉलोनीज में डेवलप करने के लिए उसको हम स्प्रेड कर देते हैं सॉइल सॉइल को। सक्सेसिव डाइल्यूशन ऑफ सॉइल्स मींस जो भी इसमें सॉइल को मिक्स करते हैं विद वाटर और अनदर सब्सटेंस टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द सैंपल, so this makes it easier to count the bacteria and grow them. तो इससे इजी हो जाता है बैक्टीरिया को काउंट करना and also grow them. Depending upon extent of dilution, plates may be filled with a huge number of colonies or very few. Residue. A, a homogenized, failed, moist sample of top soil and bottles containing 90 ml of sterilized water was taken to perform. First, add a log subsample of topsoil to the bottle of sterilized water. Tightly cap and shake vigorously for 10 minutes to disperse the soil. 10 ml of 10 to power minus 1 dilution to another bottle of sterilized water. ट्रांसफर कर देंगे इस वाटर को. Use a sterolite to take a sample from the middle. Tightly cap and shake to uniformly mixed. Third, repeat step 2 using the 10 to power minus 2 dilution to make a 10 to power minus 3 dilution and proceed similarly, making 10 to power minus 4, 5, 6, and 7 dilutions. Means involves successive. Fourth point is from the 10 to power minus 5 dilution, transfer 1 ml to each of two sterile petri dishes uses a sterile 1 ml peptide. Fifth point, into each seeded petri dishes, pour enough sterile melted agar to fill dish about 2 full. 6. After the agar has solidified, invert plates and incubate at 35 degrees centigrade for a week. Last point is that we count the number of colonies on plates from the dilution that contains from 30 to 30 to 300 colonies. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।